reflected system, the total part difference becomes, for the reflected system, the total part difference becomes 2 mu t cos r plus or minus lambda by 2. ये क्यों किया मैंने plus or minus lambda by 2? Because one of the ray means R1 reflect from denser to rarer medium, and so that's why the additional path changes takes place. एक रे के अंदर चेंज हो रहा है, एक के अंदर नहीं हो रहा है, so that's why total part difference जो था it becomes 2 mu t cos r plus or minus lambda by 2. So for reflected system, the total part difference is 2 mu t cos r plus or minus lambda by 2. Do you understand it this? Got the point? Yes or no? Sir. Yes, sir. कल करे समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नहीं sir. Yes, sir. By solving the derivation, we have got the part difference delta equal to 2 mu t cos r. But in reflected system, additional path change of lambda by 2 is takes place. Therefore, the total part difference becomes 2 mu t cos r plus or minus lambda by 2. Now we are going to find out the condition for constructive interference in reflected system. Reflected system हम स्टडी कर रहे हैं, यानी अपर सरफेस के ऊपर फिल्म जो थी उसका अपर सरफेस के ऊपर जो रेज है R1 और R2 वो स्टडी कर रहे हैं हम. That is called as reflected system. So now we are going to find out the condition for the constructive interference and destructive interference in case of reflected system. In reflected system में क्या conditions मिलती है constructive interference और destructive interference के लिए? We know that in constructive interference the brightness increases, so that's why it is also called as the maxima. Condition for constructive interference is also called as the condition for maxima, or it is also called as the condition for brightness. कभी क्वेश्चन पेपर में पूछा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कभी पूछेगा आपको कंडीशन फॉर ब्राइटनेस, कभी पूछेगा व्हाट आर द कंडीशन फॉर मैक्सिमा. सो ऑल द थ्री थिंग्स आर द सेम, तीनों भी चीजें सेम है. कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इज नथिंग बट द मैक्सिमा, इट इज आल्सो कॉल्ड एज ब्राइटनेस. सो वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. Just 1 minute, I will share camera. Excuse me, sir. 1 minute. Okay, just 1 minute. Just 1 minute. Screen visible है? Yes, sir.
So now we are going to find out the condition for constructive interference. So see here, what is the condition for constructive interference? So we know that the general condition for constructive interference is, what is the general condition for constructive interference? We already studied about the condition for constructive interference. What is the condition for constructive interference? N Path lambda. difference which is n lambda. तो बोला Path difference which is equal to n lambda. Lambda. condition for constructive interference. Path difference is n lambda. आवाज नहीं येते मला. N lambda. Path difference is n lambda and phase difference is 2n pi. लिख दिया था आपको. Condition for general condition for the constructive interference is path difference delta equal to n lambda. Okay. So here delta equal to n lambda. Now here, what is the path difference in case of reflected system? अभी हमने फाइंड आउट किया टोटल पार्ट डिफरेंस. व्हाट इज द टोटल पार्ट डिफरेंस? 2 mu t cos r plus or minus lambda by 2. 2 mu t cos r plus or minus lambda by 2. ये देखो 2 mu t cos r plus or minus lambda by 2. Just we have find out this derivation. Total path difference equal to 2 mu t cos r plus or minus lambda by 2. Now we'll put this value into this equation number 1. इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पार्ट डिफरेंस का वैल्यू पुट अप करेंगे हम. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पार्ट डिफरेंस? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पार्ट डिफरेंस? 2 mu t cos r plus or minus lambda by 2 इक्वल टू n lambda. सिंप्लीफाई करेंगे इसको इन दिस वे. विल सिंप्लीफाई दिस इन दिस वे. ये जो प्लस और माइनस लैम्बडा बाई 2 था इस साइड में राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे हम. सो इट विल बिकम 2 mu t cos r equal to n lambda, ये जैसे कि वैसे n lambda and this lambda by 2 इस साइड में राइट हैंड साइड में. सो दिस प्लस बिकम माइनस एंड माइनस बिकम प्लस. ये प्लस जो था वो इस साइड में आने के बाद माइनस होगा और माइनस जो था वो प्लस होगा. बट एट द टाइम ऑफ राइटिंग वी हैव टू राइट प्लस और माइनस. एक्चुअली माइनस और प्लस था बट लिखते समय इस टाइप से. नाउ सिंप्लीफाई करेंगे इसको. n lambda प्लस और माइनस lambda by 2. सो इट विल बिकम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको इन दिस वे. दैट इज 2n lambda प्लस और माइनस lambda डिवाइड बाय 2. नाउ ये जो 2 था दोनों टर्म्स के साथ लेंगे हम. इट विल बिकम 2n lambda by 2 प्लस और माइनस lambda by 2. 2n lambda by 2 प्लस और माइनस lambda by 2 in this way. Now this lambda by 2 we can take the common. lambda by 2 कॉमन लेंगे हम. सो ब्रैकेट में क्या मिलेगा आपको? In bracket 2n plus or minus 1 lambda by 2. In bracket we have got 2n plus or minus 1. Outside the bracket lambda by 2. Commonly lambda by 2. So we have got the condition for constructive interference in reflected system. That is 2 mu t cos r equal to 2n plus or minus 1 lambda by 2. We have got the condition 2 mu t cos r equal to 2n plus or minus 1 lambda by 2. Do you have any problem up to this? कोई problem? No. No, sir. The condition for constructive interference. You should write on the general condition for constructive interference is path difference equal to n lambda. Now put the value of path difference. Just we have calculated the path difference. The total path difference is 2 mu t cos r plus or minus lambda by 2. ये वैल्यू पुट अप करेंगे उस इक्वेशन में हम, इक्वेशन नंबर 1 में. And after solving the equation, we have got the final condition, that is 2 mu t cos r equal to 2n plus or minus 1 lambda by 2. ये condition मिलती है आपको. Then we have to find out what is this? This is the condition for constructive interference, or it is also called as the condition for maxima. It is also called as the condition for brightness. Now we are going to find out the condition for destructive interference. So again we'll repeat the same process repeat करेंगे हम. The general condition for destructive interference is, what is the general condition for destructive interference?
टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस में हमने पढ़ा था ये सब. The part difference delta equal to 2n plus or minus 1 lambda by 2. The condition for destructive interference is delta equal to part difference equal to 2n plus or minus 1 lambda by 2. Now we'll put the value of part difference. Part difference की value put up करेंगे हम. So what is the value of part difference? That is 2 mu t cos r plus or minus 1 lambda by 2. ये value put up किया हमने part difference की जगह पे. ये जो part difference था उसकी जगह पे जो find out किया हमने part difference वो put up किया. So equation becomes 2 mu t cos r plus or minus lambda by 2 equal to 2n plus or minus 1 lambda by 2. Now we'll simplify this equation by just moving this plus or minus lambda by 2 on the right hand side. Right hand side में लेके जाएंगे. राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये प्लस जो था माइनस होगा, माइनस जो था प्लस होगा. लिखते समय प्लस और माइनस ही लिखते हैं, बट आपको समझना चाहिए इसलिए मैंने माइनस ऊपर लिखा, प्लस नीचे लिखा. ओके. नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं हम. सो ये जो लैम्बडा बाई 2 है, लैम्बडा बाई 2 से ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे. सो ब्रैकेट बिकम्स 2n मल्टीप्लाई बाय लैम्बडा बाई 2, 2n मल्टीप्लाई बाय लैम्बडा बाई 2, 1 multiplied by lambda by 2, that is equal to plus or minus lambda by 2, minus or plus lambda by 2. इस टाइप से इक्वेशन तैयार हुआ आपका. लास्ट के अंदर जो रो दिख रही है उस टाइप से इक्वेशन तैयार हुआ आपका. सो नाउ 2 गेट कैंसल. ये 2 कैंसल हुआ. दिस इज प्लस लैम्बडा बाई 2 एंड दिस इज माइनस लैम्बडा बाई 2. जब ये माइनस होगा तो ये वाला प्लस रहेगा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा. सो इट गेट कैंसल. फाइनली व्हाट इज रिमेनिंग? ओनली n लैम्बडा इज रिमेनिंग. सो द फाइनल इक्वेशन बिकम्स 2 mu t cos r equal to n lambda. The final equation becomes 2 mu t cos r equal to n lambda. We have got equation 2 mu t cos r equal to n lambda. So just we studied about the condition for constructive interference and destructive interference in reflected system. So what are the condition? For constructive system, we have got the conditions, that is 2 mu t cos r equal to 2n plus or minus 1 lambda by 2. This is for the constructive interference. And for the destructive interference, we have got the conditions 2 mu t cos r equal to 2 mu t cos r equal to n. और दिस इज आल्सो कॉल्ड एज द कंडीशन फॉर डार्कनेस. डार्कनेस के लिए भी कंडीशन बोलेंगे हम इसको. और वी कैन से दैट द कंडीशन फॉर मिनिमा. डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इज कॉल्ड एज मिनिमा और इट इज आल्सो कॉल्ड एज डार्कनेस. कंडीशन फॉर मिनिमा, कंडीशन फॉर डार्कनेस, कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ऑल आर द सेम. डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? No, sir. हॅलो, No, sir. रिप्लाय करा कोणीतरी, मला कळत. No, sir. No, sir. प्रॉब्लेम रिगार्डिंग कंडिशन्स? No, sir. No, sir. No, sir. So now we'll study about the transmitted system. Transmitted system study करेंगे हम. Just 1 minute. One minute.
Just 1 minute. I'm going to share the screen. कुछ प्रॉब्लम हो रहा है. Okay, no problem. Again, refer the diagram. So just we have completed the reflected system, means R1 और R2 के ऊपर concentrate किया था. Now we are going to study about the transmitted system. What is the transmitted system? So the rays we have got after the transmission through the film. Film में से transmission होने के बाद जो rays मिल रहे थे आपको, that is T1 and T2. So when T1 and T2 after traveling some distance interfere with each other, ये T1 और T2 भी कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद इंटरफेयर हो गए एक दूसरे के साथ. So the type of interference depends upon the part difference between T1 and T2. T1 और T2 के बीच में जो part difference होगा उसके ऊपर डिपेंड्स करेगा कि whether they will interfere constructively or destructively. So just we have completed the reflected system. In the similar way, we can find out the part difference between T1 and T2 by in the same way by deriving the derivation. जैसे reflected system में derivation derive किया था, वैसे derivation derive करके you can find out the part difference between T1 and T2. So when we find out the part difference. When we find out the part difference between T1 and T2, derivation solve करने के बाद यदि आप part difference find out करते हो, तो we'll get the same part difference, just like the R1 and R2. R1 और R2 में जो part difference था, same part difference T1 और T2 में भी मिलेगा. So what is the part difference between T1 and T2? So the part difference between T1 and T2 in transmitted system is equal to part difference equal to delta equal to 2 mu t cos r. 2 mu t cos r इतना part difference मिलेगा जितना reflected system में मिल रहा था आपको. Now here whether there is the additional part difference takes place or not, we'll check whether the जैसे यहाँ पे additional part difference lambda by 2 का takes place हुआ था, transmitted system में होता है क्या देखते हैं हम. So T1 consider करेंगे. T1 कैसे प्रोड्यूस हुआ, तो when this ray incident at point B, what happened? Refraction of light is takes place. Refraction जब होता है तो कोई additional part difference नहीं होता है. So when this refracted ray incident at point C point पे incident हो रहा है. C point पे incident होने के बाद क्या हो रहा है, फिर से refraction हो रहा है, उसका transmission हो रहा है और refraction हो रहा है. Refraction के अंदर कोई भी part difference नहीं होता है. So T1 के अंदर कोई भी additional part difference is not takes place. There is no any additional part difference takes place in T1 after transmission. Transmission के बाद T1 में कोई भी additional part change नहीं होता है. Okay. Now we'll check about the T2. T2 के अंदर कुछ change होता है क्या, check करते हैं हम. So यहाँ पे B point से refraction हुआ, कोई change नहीं होगा. At point C, the reflection of light is takes place from rarer to denser medium. C point के ऊपर refraction कैसे हो रहा है, reflection कैसे हो रहा है, from rarer to denser medium. ये जो CD, the ray along the CD, ये reflect हो रहा है, कैसे reflect हो रहा है, from rarer to denser medium. And according to Stokes' second law, when the ray reflects from rarer to denser medium, there is no additional path change takes place. So कुछ भी after reflection there is no any change. कुछ भी चेंज नहीं होगा. The second reflection is takes place at point D. D point पे फिर से रिफ्लेक्शन हो रहा है. D point पे जो रिफ्लेक्शन हो रहा है, that reflection is also from rarer to denser medium. From rarer to denser medium. And when the reflection is takes place from rarer to denser medium, according to Stokes' second law, there is no path change takes place. यहाँ पे भी कोई path change नहीं होगा. तो ये रे ऐसे आया, यहाँ पे रिफ्लेक्शन हुआ, यहाँ पे रिफ्लेक्शन हुआ, दो पॉइंट पे रिफ्लेक्शन हुआ, दोनों भी रिफ्लेक्शन आर फ्रॉम rarer to denser medium, so that's why no additional path change takes place.
यहाँ पे लास्ट रिफ्लेक्शन हुआ, यहाँ पे रिफ्लेक्शन होने के बाद ये रे यहाँ पे आया ई पॉइंट पे, एट ई पॉइंट रिफ्रैक्शन इज टेक्स प्लेस, ये रिफ्रैक्शन हो रहा है. So we know that in refraction there is no any change, कोई भी change नहीं होता है. So there is no any additional path change takes place in T2 also. T1 में तो नहीं हो रहा है, T2 के अंदर भी कोई additional path change नहीं हो रहा है. So that's why the total path difference between T1 and T2 remains the same. There is no need to add lambda by 2 or something. कुछ भी add करने की जरूरत नहीं. So the total path difference between T1 and T2, it becomes delta equal to 2 mu T cos R. The total path difference becomes delta equal to 2 mu T cos R only. 2 mu T cos R only. Just 1 minute. So what is the total path difference between transmitted system में क्या मिलता है total path difference? So the mu T cos R. There is no need to add or minus the lambda by 2. कुछ करने की जरूरत नहीं. So now we are going to find out the condition for. So yeah, I have written here. There is no additional path change. So that's why the total path difference is 2 T cos R. Now the condition for constructive interference for transmitted system. Now we are going to find out the conditions for the transmitted system. पहले जो देखा था वो reflected system के लिए देखा था. So condition for constructive interference. Again, we'll write the general condition for constructive interference is. What is the general condition for constructive interference? The path difference equal to n lambda. What is the next step? Now we have to put the value of this path difference. ये path difference की value put up करेंगे हम. What is the path difference? This is the path difference. ये path difference की value यहाँ पे से equation मिला आपको. That is 2 mu t. Path difference की value put up किया. I have got the equation equal to n lambda. There is no need to simplify this equation. कोई simplification की जरूरत नहीं. So we have got the condition for constructive interference for the transmitted system is 2 mu T cos R equal to n lambda. Or this is our maxima. Now we are going to find out the condition for destructive interference in the transmitted system. So again we'll write the general condition for destructive interference is. What is the general condition? Minus 1 lambda by 2. This is the condition for destructive interference. Now what is the next step? Just we have to put the value of path difference. Path difference की value put up करना है. So when we put up the value of path difference, the equation becomes, this is the path difference. 2 mu T cos R equal to 2n plus or minus 1 lambda by 2. This is the final equation. This is the final condition for destructive interference in case of transmitted system. Transmitted system में we have got the equation that is 2 mu T cos R equal to 2n plus or minus 1 lambda by 2. Do you understand? If you observe the conditions for reflected system and conditions for transmitted system, then it is found that the condition for reflected system, देखो construction 2 mu T cos R equal to 2n plus or minus 1 lambda by 2. This is the condition for constructive interference in reflected system. Same condition
ट्रांसमिटेड सिस्टम में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए सेम कंडीशन मिलती है. Means the condition for constructive interference in reflected system becomes the condition for destructive interference in transmitted system. And similarly, constructive interference में जो destructive interference के लिए condition थी, that becomes the condition for constructive interference in transmitted system. The condition for constructive interference in reflected system becomes the condition for destructive interference in reflected system becomes the condition for बताता हूँ आपको. This is the constructive ये reflected system में ये जो constructive interference का conditions था, that becomes the condition for destructive interference in transmitted system, and the condition for for constructive interference becomes the condition for destructive interference in transmitted system, and the condition for destructive interference in reflected system becomes the condition for constructive interference in the transmitted system. This is the comparison. Do you understand? Hello? Yes, sir. So I think this is sufficient for today. Today, in Yes, this sir. lecture, we studied about the reflected system and transmitted system. We studied the condition for constructive interference and destructive interference in reflected system, as well as the condition for constructive interference and destructive interference in transmitted system. And finally, we also studied the comparison between constructive reflected system and transmitted system. दोनों का comparison भी देखा हमने. So these conditions are very important. MCQs वगैरह के अंदर conditions के ऊपर problems है तो कुछ questions आ सकते हैं. So ये conditions सबको by heart होनी चाहिए. It's not very difficult. It's very easy and simple. So in next lecture we are going to study about the that is the आपने observe किया होगा in rainy season आपने रास्ते के ऊपर observe किया होगा कि water surface के ऊपर जब oil गिरता है, so it appeared color, वो colors दिखते हैं आपको जो oil वगैरह गिरता है. So when the thin film of oil is formed on the water surface, then when the light incident on that thin film, then some of the rays are reflected from the upper surface of the film, and some of the rays are reflected from the lower surface of the film. And when these reflected rays interfere with each other, the interference pattern is formed, and because of that, interferences takes place, and because of that, that thin film on the water surface appear colored. वो color दिखते हैं. So क्यों कौन से color और क्यों दिखते colors next lecture में हम continue करेंगे on Monday. So I think this is sufficient for today. And next lecture will continue with the colors appearing in the thin film on the still water surface. Why the thin film appear colored on the still water surface? Okay, I think so. This is sufficient. Today I'm not going to conduct the what is that attendance नहीं ले रहा हूँ मैं. But from next lecture I'll share the Google form with you for each and every lecture. हर lecture को Google form में share करूँगा आपके साथ, और आपको उसके अंदर आपका details भर के देना है, आपका नाम और कुछ भर के देना है, तो आपका attendance automatic आ जाएगा मेरे पास. So from next lecture I'll share the link of Google form with you. आज के दिन जाने देता हूँ. From Monday attendance जो रहेगी वो Google form पे लेने वाला हूँ, और link जो रहेगी I will link only for 5 minutes के लिए active रहेगी. After 5 minutes it will be deactivated automatically. 5 मिनट के अंदर आपको attendance देना पड़ेगी, बाद में मैं deactivate कर दूंगा link को. So thank you very much. Sir, hello. हाँ बोला.
So can you please share all the notes, whatever you taught? हाँ ओके, आई एम गोइंग टू फॉर्म द गूगल क्लासरूम ऑल्सो। गूगल क्लासरूम बनाने वाला हूँ आपका, तो जो भी नोट्स वगैरह गूगल क्लासरूम पे मैं लोड करने वाला हूँ। सो मंडे तक बन जाएगा आपका गूगल क्लासरूम। आई विल नॉट शेयर द लिंक ऑफ द गूगल क्लासरूम, आपको मैं ऐड करूंगा गूगल क्लासरूम में, आपका ईमेल आईडी वगैरह आपको मेल के ऊपर मैसेज आएगा, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आपने एक्सेप्ट किया कि ऑटोमेटिकली यू ज्वाइन द गूगल क्लासरूम। सो वट एवर में भी असाइनमेंट्स होगी वो भी गूगल क्लासरूम पे डालूंगा। आपको कोई सबमिट करना है असाइनमेंट्स वगैरह तो भी आप गूगल क्लासरूम पे सबमिट कर सकते हैं। सो वट एवर भी मटेरियल रिलेटेड विद द